यहाँ पे देखें कि सबसे पहले ये एडमंड स्पेंसर जो है, इसकी बियोग्राफी है। ये आप लोगों ने बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मस्ट पढ़नी है। आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए बेटा आपने मस्ट ये बियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें ये छोटी छोटी जो चीजें लिखी हुई हैं, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो गई, उनकी लिविंग प्लेसेस हो गई, ये सारी चीजें ये आपने माइन्यूटली जो है वो अंडरलाइन करनी है, इसकी माइन्यूटली डिटेल्स पढ़नी है, ताकि अगर आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस में मार्क्स पूरे हैं तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह 20 मार्क्स तो बेटा आप लोगों के पक्के होने चाहिए ना। लाइक वो ज्यादातर यही आता है ना कि कैरेक्टर कौन सा है, प्लेसेस कौन सी हैं, ठीक है, लोकेशंस क्या थी या उनके मकासद क्या थे। तो कैरेक्टर बेस्ड आप लोगों ने स्टोरी पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडमंड स्पेंसर 1550 to 1559 was an English poet best known for the Fairy Queen, an epic poem and fantastical allegory celebrating the Tudor dynasty and Elizabeth I. He is recognized as one of the premier craftsmen of modern English verse and is considered one of the greatest poets in English language. Edmund Spenser was born in Eastsmith, London, around the year 1553. As a young boy, he was educated in London and matriculated as a Caesar at Pembroke College, Cambridge. He became a friend of Gabriel Harvey at Cambridge. In 1579, he published the Shepherd's Calendar and around the same time married his first wife, Maccabe's child. In July 1580, Spenser went to Ireland in service of the newly appointed Lord Deputy Arthur Grey. At some time between 1587 to 1589, he acquired his main estate as Kilcolman near Deneril in Norfolk. Among his acquaintances in the area was Walter Raleigh, a fellow colonist. In 1590, Spenser brought out the first three books of his famous work, The Fairy Queen. ठीक है, 1590 में एक्चुअली इसने फेरी क्वीन लिखी है और उसमें इसने फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको जरा अंडरलाइन कीजिएगा। Having traveled to London to publish and promote the work with the likely assistance of Raleigh, he was successful enough to obtain a life pension of £50 a year from the Queen. He probably hoped to secure a place at London through his poetry, but his next significant publication boldly antagonized the Queen's principal secretary, Lord Berkeley, through its inclusion of the satirical Mother Hubbard's Tale. He returned to Ireland. By 1594, Spenser's first wife died, and in that year he married Elizabeth Boyle, to whom he addressed the sonnet Sequence Amorite. The marriage itself was celebrated in Abidamalion. In 1596, Spenser wrote a prose pamphlet titled A View of the Present State of Ireland. This piece, in the form of a dialogue, circulated in manuscript, remaining unpublished until the mid-17th century. It is probable that it was kept out of print during the author's lifetime because of its inflammatory content. The pamphlet argued that Ireland would never be totally pacified by English until its indigenous language and customs had been destroyed, if necessary, by violence. अब यहाँ पे क्या था कि ये प्रोबेबल था कि इट वाज केप्ट आउट ऑफ प्रिंट ड्यूरिंग द ऑथर्स लाइफ टाइम, कि इसको प्रिंट से अनपब्लिश रखा जाए, और बिकॉज ऑफ इट इन्फ्लेमेटरी कंटेंट, क्योंकि उसका कंटेंट ही ऐसे था जैसे न्यूज चैनल्स को आज पे किया जाता है, उस दौर में एलिजाबेथन एरा में राइटर्स को पे किया जाता था, ठीक है। जो एंटी गवर्नमेंट होते थे वो भी पे करते थे, जो एंटी चर्च होते थे वो भी पे करते थे, और जो गवर्नमेंट होती थी वो भी राइटर्स को पे करती थी ताकि वो इनके हक में लिखें, ठीक है। तो pamphlet argued that Ireland would never be totally pacified by English until its indigenous language and custom had been destroyed. उसके अंदर आर्ग्यू ये किया गया था कि अब जो आयरलैंड है वो कभी भी पैसिफाइड नहीं होगा बाय इंग्लिश, क्योंकि इसकी इंडिजीनियस लैंग्वेज और कस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इफ नेसेसरी बाय वायलेंस। और क्या है, अगर वो पैसिफाइड होगी भी तो कैसे, वायलेंस के थ्रू होगी। यानी कि इसमें एक्चुअली क्या था, आप लोगों ने कल्चर एंड एम्पेरियलिज्म में पढ़ा होगा, उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो इंग्लैंड है इन्होंने कॉलोनाइज कर लिया था डिफरेंट अपने, जो भी आयरलैंड भी एक्चुअली कॉलोनाइज ही एक एरिया था जो कि इंग्लैंड ने एक्चुअली कॉलोनाइज कर लिया था बाय फोर्स और बाय वायलेंस एनीथिंग।
तो अब वो कहता है कि भाई ये जो है बिकॉज ऑफ इट, मतलब वो उस पैम्फलेट में ये आर्ग्यू किया गया था कि ये जो है ये आइलैंड है, ये जो है मतलब ये कभी भी पैसिफाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी इंडिजिनियस लैंग्वेज और उसको उसका कस्टम वो सब डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। जब एक कौम को गुलाम बना लिया जाता है तो उसके कस्टम्स और उसकी लैंग्वेज दोनों डिस्ट्रॉय होती हैं, or if necessary by violence. Later on, during the 9 Years' War in 1598, Spenser was driven from his home by the native Irish forces. ठीक है, और later on during 9 Years' War in 15 स्पेंसर को जो है उसके घर से नेटिव आयरिश फोर्सेस ने निकाला। In the year after being driven from his home, Spenser traveled to London, where he died aged 46. His coffin was carried to his grave in Westminster Abbey by other poets, who threw many pens and pieces of poetry into his grave and many tears. His second wife survived him and remarried twice. Queen ordered the treasurer pay Spenser the original £100. Spenser seemed to have had no difficulty in receiving payment when it was due, the pension being collected for him by his publisher Ponsonby. Spenser's masterpiece is epic poem The Fairy Queen. The first three books of The Fairy Queen were published in 1590 and the second set of three books were published in 1596. Spenser originally indicated that he intended the poem to consist of 12 books. So the version of poem we have today is incomplete. ठीक है, उसका ये कहना था, ओरिजिनली इंडिकेट किया था उसने कि उसने जो है पोएम जो लिखी थी एक्चुअली वो 12 बुक्स पे बेस करती थी। सो द वर्जन ऑफ द पोएम वी हैव टुडे इज इनकम्प्लीट। आज वो जो है जो वर्जन है वो इनकम्प्लीट है। डिस्पाइट दिस इट रिमेन one of the longest poem in English language. It is allegorical work and can be read as Spenser presumably ended on several levels of allegory, included as praise Queen Elizabeth I in a completely allegorical context. Follow several nights in an examination of several virtues. In Spenser's letter of authors, he stated that entire epic poem is cloudily enwrapped in allegorical rises and that the aim behind Fairy Queen was to fashion a gentleman or a noble person in virtuous and gentle discipline. इसको बेटा अंडरलाइन करें कि इसका एम क्या था। बाज़ औक़ात ये भी आ जाता है कि उसने किस मकसद के लिए लिखी थी। Spenser published numerous relatively short poems in first decade of 16th century, almost all of which cited love or sorrow. Spenser used a distinctive verse form called the Spenserian stanza in several works, including The Fairy Queen. The stanza's main meter is iambic pentameter with a final line in iambic hexameter, having 6 feet of stresses. ठीक है, stress या feet एक ही बात होती है, non-Alexandrine rhyme. And the rhyme scheme is A B B C B C C. He also used his own rhyme scheme for the sonnet. Through Spenser were well read in classical literature. Spenser strove to emulate such ancient Roman poets as Virgil and Ovid, whom he studied during his schooling, but many of his best-known works are notably divergent from those of his predecessors. The language of his poetry is purposely archaic, reminiscent of earlier work as the Canterbury Tales of Geoffrey Chaucer and to Canzonier of Francisco Petrarca, whom Spenser greatly admired. Spenser was called a poet's poet and was admired by William Wordsworth. इसको जरा अंडरलाइन कीजिएगा कि उसको टाइटल जो दिया गया था वो पोएट्स, उसको बाद औकात जब पोएट्स पोएट भी कहा जाता था, और उसको एडमायर कौन कौन से पोएट्स ने किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स, लॉर्ड बैरन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, among others. Walter Lyle wrote a dictatory sonnet to Fairy Queen in 1590, in which he claims to admire and value Spenser's work more so than any other in English language. In the 18th century, Alexander Pope compared Spenser to a mistress whose faults we see but love her with them all. और 18th century में अलेक्जेंडर पॉप ने कंपेयर किया था स्पेंसर को टू अ मिस्ट्रेस, एक मिस्ट्रेस के साथ whose faults we see. ठीक है, तो एक ऐसी मिस्ट्रेस जिसके फॉल्ट्स देखे जा सकते हैं, बट लव हर विद देम ऑल, लेकिन हम उसको यानी कि एक्सेप्ट करते हैं एक ऐसी मिस्ट्रेस
जिसके फॉल्ट तो हमें नजर आते हैं लेकिन फिर भी हम उससे मोहब्बत करते हैं। अच्छा जी, ये उर्दू में तो समरी आप लोगों ने पढ़ ली होगी। कैरेक्टर लिस्ट पढ़ ली है सबने? अच्छा जी, आगे चलें। उससे आगे चलते हैं। आज हमने पढ़ना था, ये तो खैर ब्रीफ समरी है, इसकी मेजर थीम्स की तरफ चलते हैं, ठीक है।